Now, first adjustment continued. Interest on capital we have calculated. Next, in the first adjustment, interest on drawings. Okay, and it's given 6%. First, see the notes. Interest on drawings you have to calculate 6%. Now, students, check your trial balance. Harsha's drawings is 5,000. Okay, Harsha's drawings is 5,000. So 5,000 into 6%, that will be 300. Okay, Harsha's drawings is 5,000. So 5,000 into 6% will be 300. But in the bracket 1/10/16 date is given. So 1/10/16 means from the 10th month you calculate 10, 11, 12, 1, 2, 3. So only for 6 months you have to calculate the interest, that is 150. Okay, Harsha's drawings are only for 6 months. Then Chaya's drawings is 10,000. Now on 10,000, if you will calculate the interest, it will be 600. Okay, 10,000 6% will be 600. But the date is given 1/1/17. That means January, February, March. Drawings is only for 3 months. So calculate it for 3 months. Okay, ये 6 months के लिए है और ये 3 months के लिए as per the date. So उतना ही मैंने interest calculate किया. But in this sum, in the trial balance, interest on drawings is given. Okay, check your trial balance. Interest on drawings is also given. Harsha's interest on drawings is given 100. Okay, and Chaya's interest on drawings is given 50. This is given in trial balance. Now you have calculated this. आपने कैलकुलेट किया तो दोनों का 150 आता है. बट ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय हर्षा इज 100. दैट मीन्स 100 तो रिसीव हो गया है, तो बाकी आउटस्टैंडिंग क्या हुआ 50. सो ऑटोमेटिकली 150 हो जाएगा. In the same way, Chaya's interest on drawing is actually 150, but in the trial balance it is given that 50 have been received. So remaining out of this 100 will be outstanding. Okay, ये टोटल है. इसमें से जितना ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बाकी क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग. नाउ गिव द इफेक्ट एज पर द फॉर्मेट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स you have to show on PL Appro credit side. But how you will show? अभी मैंने जैसे आपको इसमें वर्किंग में करके दिखाया. ओके, जैसा वर्किंग में आपको एक्सप्लेन किया सेम वी विल राइट. 150 plus 150, 300. Okay, now every adjustment has double effect. From credit side, give the double effect to debit of current account, last date. Okay, interests are paid on last date. To interest on drawings. Now give only the effect of adjusted amount. Outstanding of Harsha, outstanding of Chaya 100. Clear? Every adjustment has double effect, so only adjusted amount you have to write here, not the full amount. That you have to be careful. Okay, this is the important point in this question. Again, first adjustment continued. Interest on capital is over with double effect. Interest on drawings with double effect. Next is 10% interest on opening balance of current account. Opening balance of current account. Now see, Harsha's current accounts balance is this 6,000. तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट पे कर दो to interest on current account. Okay, as you can see, Harsha's current account shows the balance of 6,000. ये दिख रहा है ना, तो इसी पे इसका 10% हो जाएगा. हर्षा का 6,000 का
10%. Okay, 600, right? I'm explaining you in working notes, then it will be clear for you. See, interest on current account, that is given 10%. Okay, now see Harsha's current account. Harsha's current account shows the balance 6,000. So हर्षा के 6,000 के करंट अकाउंट पे बैलेंस कितना होगा? 600. In the same way, Chaya's current account shows the balance of rupees 4,000. Okay, Chaya's current account shows you the amount 4,000. So its 10% will be 400. दोनों का बैलेंस पे कैलकुलेशन किया. Now check your trial balance. In the trial balance, interest on current account of Harsha is given 100. Interest on current account of Harsha, that is given 100. Okay, but interest on current account of Chaya is not given. ये मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूँ. Now this is total interest on current account 600, but amount paid is only 100. So remaining outstanding will be 500. Clear? और यहाँ पे कुछ भी नहीं पे किया, यानी पूरा का पूरा 400 आपको पे करना बाकी है. Okay, now let's give the double effect. Now students, see, check your trial balance. Harsha's current account is showing debit balance, right? Harsha's current account is showing debit balance. Okay, तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे करंट अकाउंट में डेबिट साइड. तो उसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा PL Appro में क्रेडिट साइड ऑन Harsha's करंट अकाउंट. ओके, जैसा मैंने आपको इसमें वर्किंग में दिखाया, इट विल बी सेम. 100 इज पेड but outstanding is 500, so total 600. Every adjustment has double effect, so this 500 will be transferred here. Just आपको ये ध्यान रखना है कि हर्षा का करंट अकाउंट का बैलेंस है डेबिट साइड, तो डेबिट के नीचे यहीं पे उसका इंटरेस्ट आएगा, बट उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? फ्रॉम दिस डेबिट टू PL Appro. जैसे PL Appro उसके अपोजिट इफेक्ट्स करंट में आते हैं, ऐसे करंट के अपोजिट इफेक्ट्स जाते हैं PL Appro में. सो हर्षास बैलेंस इज ऑन डेबिट साइड, इंटरेस्ट विल बी ऑल्सो ऑन डेबिट साइड. फ्रॉम हेयर इट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड. जैसा मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखाया वैसे ही एवरी एडजस्टमेंट हैज डबल इफेक्ट, सो ओनली एडजस्टेड अमाउंट, उसका ही सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा. नाउ छाया, एज यू कैन सी छायास करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, तो उसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी कहाँ पे आएगा? यहीं पे क्रेडिट साइड. बट सेकेंड इफेक्ट इट विल बी फ्रॉम क्रेडिट टू डेबिट साइड ऑफ PL Appro to interest on Chaya's here total amount you have to write. It's not given in trial balance, so full 400 you have to pay, and even give the double effect of also 400. Okay, इसमें कोई एडजस्टमेंट का नहीं है, पूरा का पूरा ही आपका आउटस्टैंडिंग है. ओके, सो this is our first adjustment only. It's very important for making your concepts clear. Now moving for second adjustment, provide 10% depreciation on machine. It's very simple. Okay, give the heading fixed assets, write machines, check the trial balance. Machinery is given 40,000, 10% depreciation means 4,000, net 36,000. Second effect, every adjustment has double effect. PL Appro में second effect. Okay, now this is very simple. Third adjustment, monthly salary of Chaya is rupees 500. If simple salary is there,
we write in PL account. But Chaya is the partner. Partner's salary is recorded where? In PL Appro debit side to Chaya's salary. Now, in adjustment, what is said? That monthly salary of Chaya is 500, right? So yearly will be 500 into 12, 6,000, right? But you see in the trial balance, if you check in the trial balance, Chaya's salary is given 5,500. That is given in trial balance. But अगर आप एडजस्टमेंट देखो तो बोल रहे हैं कि 500 मंथली सैलरी है. मंथली सैलरी 500 तो साल की कितनी होगी? 500 इंटू 12 6,000, यानी होनी चाहिए 6,000, बट ट्रायल बैलेंस में बोल रहे हैं 5,500. सो रिमेनिंग 500 इज outstanding, so automatically it will be 6,000. Give the double effect. Okay, sorry, from PL Appro, always from PL Appro second effect goes to either capital account or to current account. यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट, तो यही ट्रांसफर होगा. फ्रॉम डेबिट टू क्रेडिट बाय सैलरी. हर्षा नहीं, छाया की सैलरी है. ओके, 500. वाई 500? ओनली एडजस्टमेंट अमाउंट हैज टू बी गिवन, डबल इफेक्ट. पीएल एप्रो का सेकेंड इफेक्ट कैपिटल और करंट में, और यहाँ का सेकेंड इफेक्ट यहाँ आता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो नाउ हियर आवर थर्ड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो ओवर.